The COVID-19 pandemic and its resulting lockdowns have severely impacted India's performing artists, who, in the absence of live shows, have been struggling to sustain themselves. This is especially true for indigenous and folk artists, who may not have the necessary tools and information to navigate this paradigm shift. Being acutely aware of the need to bridge these gaps, Bhuma Trust and the Center for Media and Alternative Communication, in collaboration with CCRT, with the support of Coal India Limited, have initiated a series of online workshops for CCRT's national scholarship holders. These guiding workshops support and enable young indigenous artists from across the country to record, produce, and promote their art and themselves through online media. This project, titled Performing Arts and the Online World, was virtually inaugurated on the 17th of July 2021. The inauguration ceremony was moderated by Dr. Rahul Kumar, Deputy Director, CCRT. Welcome everyone, all the dignitaries over here, and all my CCRT scholar artists and scholarship holders for beginning of this unique endeavor, unique initiative in the form of workshop series we are going to organize from today onwards. The guests were welcomed on behalf of Bhuma Trust and CMAC by Ms. Vidya Shah, Director, Bhuma Trust, who introduced this initiative and its history of conceptualization. Namaskar. I am very delighted that इतना ज़रूरी काम की पहल हम लोग करने जा रहे हैं आज, और इस अवसर पर मैं CCRT की ख़ास ही शुक्रगुजार हूँ. बिग थैंक यू कि आपने इस काम के महत्व को समझा और आपने भी चाहा कि इस ऑनलाइन की जो ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में हो गई है, इसमें हम लोग साथ मिलकर कुछ काम कर सके. ये जो कोविड का मसला हमारी ज़िंदगी को खाए हुए बैठा है, पिछले 2 सालों से लाखों इंडियन आर्टिस्ट जो हैं वो दे हैव गॉन आउट ऑफ वर्क. So there have been many struggles in these last 2 years, and I'm grateful that we found an opportunity to motivate young scholars, young artists, budding artists, supported by CCRT. आप लोगों का काम इतना ज़रूरी है to keep this cultural heritage of our country alive, to keep it bubbling, and to create motivation. We have to find ways. मैं फिर से एक बार CCRT को थैंक यू कहना चाहूँगी, और मैं CIL कोल इंडिया लिमिटेड को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी. Dr. Hemlata S. Mohan, Honorable Chairperson CCRT, in her inaugural address, shared CCRT's vision for supporting India's artists and stressed on the importance of shifting from a real to digital landscape. Wonderful initiative which has been taken by CCRT and Bhuma Trust for empowering the young CCRT scholarship holders and young scholar artists during this COVID-19 pandemic. ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है आज के समय में, जब सारी दुनिया इंटरेक्शन के लिए ऑनलाइन मोड पे जुड़ी है, तो सब उसको बेहतर समझ पाए. In the beginning, CCRT has decided to focus on the scholarship holders who are getting scholarship in the field of traditional indigenous folk art forms. This is the art form. Since this is the art form where scholars are more vulnerable to this sudden paradigm shift from local to global and physical to digital. I'm sure that this unique initiative and joint venture of CCRT and Bhuma Trust will be able to take this goal of CCRT to its meaningful end, and we will achieve our goal of Atmanirbhar Bharat by digital empowerment. This was followed by opening remarks from Shri Rishi Kumar Vashisht, Director, CCRT, who underlined the significance of digital skills and the workshop series. इस कार्यक्रम को करने की ख्वाहिश शायद हम लोग वर्ष 2000 से ही महसूस करते आ रहे थे. मैं ये महसूस करता था कि जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स हमारे क्लासिकल के बच्चों में है, वो इन बच्चों में जो ज़्यादातर या तो रूरल बैकग्राउंड से आते थे या ट्राइबल बैकग्राउंड से आते थे, वो तैयारी उनमें देखने को
नजर नहीं आती थी। मेरा निवेदन रहेगा कि आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फोक एंड ट्रेडिशन एंड इंडिजिनस आर्ट फॉर्म्स के बच्चे हैं, आप उनको इस कार्यशाला में ट्रेंड कर पाएं, उनको प्रशिक्षित कर पाएं, और CCRT की तरफ से जो भी मदद आपको चाहिए वो आपको पूर्ण रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि दी जाएगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ हार्दिक धन्यवाद आपका। A short musical recording created and performed by CCRT scholars displayed a plethora of Indian talent across musical traditions and instruments. Shri Anant Vijay, senior journalist, Dainik Jagran, shared his views on the importance of culture, especially in today's world. बदले हुए स्वरूप के साथ आज हमें अपने कलाकारों के साथ, उनके साथ रूबरू होना है, उनसे मिलना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है ताकि हम एक मजबूत राष्ट्र निर्माण कर सकें। Shri B. Sairam, Executive Director, Community Development at Coal India Limited, the main supporters of the project, spoke about the need for CSR support for art and culture. Coal India feels elated for having given this opportunity to serve the art community who are keeping our ancient traditions alive. Actually, CIL's resolve to support art and culture emanates from its understanding of the situation at ground zero. Srimati Moitri Pahari, dancer and choreographer, expressed the importance of using online spaces effectively, after which the ceremony was concluded. Now, we can't deny that after few years, I think that our way of presentation will definitely change, and we have to accept that. The inaugural ceremony was followed by the launch of the workshop series on 18th of July 2021, where CCRT's young scholars from across the country were trained on and equipped with the necessary knowledge and tools required to navigate and use digital and virtual technologies. बस हम जानना चाहते हैं कि इंडिया से कहाँ से हम आज लोगों से बात कर रहे हैं. It's lovely to see a crowd, such a diverse crowd. The workshop included information on how to record audio as well as video with both consumer and professional recording equipment. While I'm singing, I'm moving a lot. Now, it's important to understand that this speaker will pick up a different sound from here. It will pick up a different sound from here, and it will pick up a different sound from here when it's right in front of me. The scholarship holders also shared recordings of their art and received valuable input, as well as answers to the numerous questions. I used to recite the jati and do the Natvangam together and keep my phone in a place to record it. So that time my voice would be very low and my Natvangam would be very high. As in the entire series, the debut workshop comprised advice from experts like filmmaker and photographer Parthiv Shah, founder director CMAC, who provided insight into different media sharing platforms, as well as useful tips on how to make the most out of the equipment and material the scholars may have. तो आप कहाँ शूट कर रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं, किस चीज के लिए शूट कर रहे हैं? क्योंकि आप जैसे विद्या मैम ने बताया कि हम नेक्स्ट टाइम ये भी बात करेंगे कि आपको स्पॉटिफाई में यूज करना है, रील में करना है, इंस्टा वीडियो में करना है, फेसबुक पे करना है, तो आपका ऑडियंस अलग अलग रहता है. और आप क्योंकि सब लोग स्टूडेंट हो और ज्यादातर स्टूडेंट हो और आगे प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो आपकी पब्लिसिटी बने वो आप काम करना चाहेंगे, आपका काम लोग ज्यादा देखें. डांसर ही हो या कोई तबला बजा रहे हो, कोई गा रहा है, उनको कैसे आप लोगों तक पहुंचा सके. तो हमारी ये वर्कशॉप का उद्देश्य वही है कि आपके पास जो चीजें घर में है, मान के चलो मोमबत्ती है आपके घर में, या आपके घर में मिरर है, या आपके घर में कोई सफेद चादर है, तो उससे हम कैसे लाइट कर सकते हैं. As this series of workshops continues to support young scholars of performative arts in the coming months, some of its participants have shared encouraging feedback. The workshop also gave me exposure to interact and know the views of other young scholars all over the country, which has enriched my knowledge and
has given me a wider vision of viewing the traditional art forms. Through this workshop, we have learned a lot of things about recording, editing, about the background players, about the sounds also. We have also learned that how to represent our talent, our art form in social media through various apps, etc. These are quite helpful for us. भूमा ट्रस्ट द्वारा CCRT स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए आयोजित वर्कशॉप हम सभी कलाकारों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। आज के दौर में जहां कलाकारों के जीवन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं डिजिटल मंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं, ऐसे दौर में साउंड, लाइट, वीडियोग्राफी इन सभी का नॉलेज होना एक कलाकार के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे दौर में भूमा ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह वर्कशॉप हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ एवं मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा CCRT एवं भूमा ट्रस्ट का।